Hello everybody, welcome back to my channel, and today we are going to start with Principles of Microeconomics 1 and Unit 1. So let's quickly begin our Unit 1 introduction. Starting with the introduction to economics. Economics मतलब कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमें इकोनॉमिक्स बताता है. सो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स and societies use limited resources to satisfy the unlimited wants. For example, here is choosing between buying a book or saving a money. If you are not having any exam, so you would not buy a book, you will save the money. So the same goes for the government, deciding between the spending on either health or defense. So this is about the economics. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. मान लो आपके पास पैसे जो हैं वो लिमिटेड हैं, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अब लैपटॉप खरीदना है या फोन खरीदना है. सो इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो ज्यादातर पर्सनल बजटिंग, बिजनेस डिसीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी समझने में हेल्प करता है. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स पढ़ के हम रिसोर्स एलोकेशन और डिसीजन मेकिंग को इजीली समझ सकते हैं. So it tells about economics helps us understand choices, costs and decision making in daily life. जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस क्यों इंक्रीज होते हैं या गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिड्यूस क्यों करती है. सो इट टेल्स अबाउट द इकोनॉमिक्स. जैसे एप्लीकेशन जो है इसकी सबसे ज्यादा बिजनेस प्राइसिंग, पर्सनल बजटिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझने में हेल्प करता है. इसमें आती है पहली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव आप छोड़ते हो जब कोई चीज या चॉइस करते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इंस्टेड ऑफ पार्ट टाइम जॉब, तो यहाँ पर जो है हमारे वेजेस जो है वो लॉस्ट हुए या सैलरीज, तो ये हमारी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा है टाइम स्पेंड स्टडिंग वर्सेज वर्किंग. हम वर्क नहीं कर रहे, सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो सैलरी है उसका लॉस होता है, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी. दूसरा है स्कारसिटी, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं बट हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड. जैसे कि एग्जांपल लिमिटेड इनकम. उसके बाद आता है मार्जिनलिज्म, दैट मींस डिसीजन मेड एट द मार्जिन. मार्जिनलिज्म का मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट का बेनिफिट और कॉस्ट इवेल्युएट करना. फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खाने से जो प्लेजर मिलता है उसको कंपेयर करो एक्स्ट्रा प्राइस या कैलोरीज के साथ. नेक्स्ट इज एफिशिएंट मार्केट्स. वो होते हैं जहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और प्राइसेस रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रू वैल्यू से. फॉर एग्जांपल, स्टॉक मार्केट में सबको न्यूज और डेटा मिलता है बट प्राइस एडजस्ट हो जाता है. सो रिसोर्सेज एलोकेटेड टू बेस्ट यूज. एग्जांपल, डिमांड सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग दी सोसाइटी. इकोनॉमिक्स से हम सोसाइटी का बिहेवियर और पैटर्न को समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्यों लोग लग्जरी गुड्स खरीदते हैं या बेसिक गुड्स ज्यादा डिमांड में होते हैं. So it explains the poverty, growth and inequality. Another is informed citizens, helps in policy understandings. Economics पढ़ के आप aware और informed citizen बन सकते हो जो समझ सके कि policies, taxes और prices को impact क्यों होता है. So examples are taxes and subsidies. So this is about the why study economics. So the next topic is microeconomics and macroeconomics. As you all know, micro means small. It study the individual units or maybe of consumers and firms. Microeconomics small units पे focus करता है, जैसे household और firms पे. For example, Apple का product price या pricing of a particular mobile phone. So it is about the microeconomics. And when we come to macro, that means large or aggregate. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पूरी इकोनॉमी पे फोकस करता है, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, such as an example of national income, inflation or unemployment. This is done on aggregate basis or on the whole economy, and microeconomics is done for the units of a particular product. Next, coming to method of economics.
मेथड्स जो हैं ये हेल्प करते हैं हमें ऑब्जर्वेशन, डेटा कलेक्शन या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को समझने में और एक्सपेरिमेंट्स में. सो फर्स्ट इज आर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ फैक्ट्स पे चलती है. एग्जाम्पल इज prices increased by 5% or unemployment rate is 7%. So this is on just the fact. And when we are coming to the normative economics, it is on the value judgment. Normative economics opinions और suggestions पे चलती है. For example, government को unemployment reduce करना चाहिए or the prices should be controlled. So this is about the positive and normative economics. Positive हमारी facts पर चलती है and normative is on value judgment. Coming next to economic policy goals. First is efficiency. Resources का best use करना. For example, reducing waste. Second is equity, fair distribution of income among all. For example, subsidies for poor. Third is growth, that means output or income increase karna, for example industrial expansion. Next is stability, inflation or unemployment control karna, for example monetary policy or RBI interest rate adjust karna. So this is about the economic policy goals. So next topic is scarcity, choice and opportunity cost. So scarcity means that our resources are limited but the human wants are unlimited. For example, a student has limited money but he wants books, clothes and a phone. So he has to choose between the three because the resources are limited and the wants are always unlimited. Second is choice. There are multiple options, like मैं कौन से multiple options में से क्या select करूं. Because of scarcity, we must choose one option over the another. For example, choosing to buy a book instead of going to a movie. You have to see what is important for you. So you have to buy a book for your paper, or either you can go for a movie if you don't have any paper. Another is opportunity cost. We have already previously talked about this. जो second best option छोड़ दिया उसका value, that is known as the opportunity cost. The value of the next best alternative given up. Remember this. The value of the next best alternative given up while making a choice, that is known as the opportunity cost. For example, spending money on snacks instead of saving. So our opportunity cost will be saving because we have given up saving. Another example is attending a friend's party instead of a class. So what we have given up here? Class. So our opportunity cost will be class learning. So this is all about the scarcity, choice and opportunity cost. So coming to next, one person economy and two or more person economy. Here is S. So coming to one person economy, इस वाले में सब कुछ self decided होता है. A one person economy is an economy where only one individual owns resources, makes the all decisions and consume whatever is produced. So the person has to choose between the different activities because the time and resources are limited, and so opportunity cost exists here. So for example, Robinson has a limited time. If he spends more time fishing, he must give up on the collecting fruits. So fruits he give up are the opportunity cost of fishing. So for example, farmer जो सब कुछ खुद produce करता है, that will be a one person economy. And coming to two or more person economy, यहाँ पर ट्रेड या कॉपरेशन से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. A two or more person economy is an economy where many individuals live together and share the limited resources. Decisions are made collectively and resources can be specialized and exchanged, which will lead to the increase in total output. For example, in a village, some people grow crops while other makes the clothes. So by specializing and exchanging goods, everyone gets more than if each person tried to do everything alone.
इफ अगर इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते रहेंगे तो उसके पास टाइम और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। अगर वही चीज कलेक्टिवली की जाए रिसोर्सेज को बांट के तो उनको जो है मैक्सिमम आउटपुट भी मिलेगा बाय शेयरिंग दी रिसोर्सेज एंड हेंस विल बी रिड्यूसिंग दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट वन पर्सन इकोनॉमी वेयर सब कुछ सेल्फ डिसाइडेड होता है और टू और मोर पर्सन इकोनॉमी में ट्रेड या कॉपरेशन से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सो नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जो काम या गुड आप सबसे अच्छा और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो उसी पर फोकस करना। मींस कंसंट्रेटिंग ऑन प्रोड्यूसिंग वन गुड or service in a which a person, firm or a country is most efficient. So by specializing, productivity increases and the resources are used more efficiently or on optimum utilization. For example, a teacher specializes in teaching while a farmer specializes in farming, so on. And another is exchange. एक्सचेंज का मतलब होता है अपनी स्पेशलाइज्ड गुड या सर्विस को दूसरों के साथ ट्रेड करना ताकि बाकी चीजें मिल सके। मींस ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स और कंट्रीज सो दैट ईच कैन एंजॉय अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स। सो एक्सचेंज बिकम्स बेनिफिशियल बिकॉज स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस द टोटल आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर सिर्फ वीट ग्रो करता है और दूसरा फार्मर सिर्फ राइस। दोनों एक्सचेंज करते हैं, दोनों को वीट भी मिलता है और राइस भी, बिना सब कुछ खुद प्रोड्यूस किए। So that is an example for exchange. The farmer exchanges wheat with the teacher in return for teaching services, maybe another example of exchange. Coming next to the advantage theory, first is our absolute advantage, another is comparative advantage. The absolute advantage, सेम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट एडवांटेज। प्रोड्यूसिंग मोर विद द सेम रिसोर्सेज, कंट्री ए प्रोड्यूसेस मोर wheat as an example. Another is you can take country A grows 10 tons of rice and B grows 5 tons of rice and with the same resources. Second is our comparative advantage जिसमें lower opportunity cost हो। So for example, India जो है export करता है IT because cost is lower than the USA. Or you can take another example of country B specializes in cloth. So this is all about the absolute advantage जहाँ पर सेम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोड्यूस करना होता है और कंपैरेटिव में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। Coming next to PPF and gains from specialization. So this is a diagram for PPF, gain and gains from specialization. There is good X and good Y. So PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिखाता है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हम लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें जो गेन्स होते हैं स्पेशलाइजेशन से तब होते हैं जब हर पर्सन या हर कंट्री अपने बेस्ट काम पे फोकस करते ट्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया स्पेशलाइजेज इन IT सर्विसेज, यूएसए इन कार्स। दोनों ट्रेड करते हैं, दोनों ज्यादा गेन करते हैं इंस्टेड ऑफ अपनी सब चीजें खुद प्रोड्यूस करना। So PPF shows scarcity and choice because we have limited resources, we have to choose the alternative combinations. Second is it is a downward slope which shows the opportunity cost. जितना हम एक गुड को ज्यादा यूज करेंगे रिसोर्सेज उतना ही हम दूसरे पे लेस रिसोर्सेज यूज करेंगे। Third is specialization improves the efficiency and due to increasing that efficiency producing what one does the best। जो भी हम एक चीज पे स्पेशलाइजेशन करेंगे प्रोडक्ट की वो सबसे बेस्ट होगी। Another is exchange becomes possible after the specialization. When we have the specialization in one product, so countries trade the surplus and as a result we gain from the specialization and which leads to the higher total and better consumption. So coming next to the production possibility frontier which is known as PPF. So PPF एक curve है जो दिखाता है trades off between the two goods. So there is one good which is consumer good and another is capital goods. So it is showing with the trade off between two goods with limited resources.
सो पॉइंट्स जो होते हैं कर्व पे, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है या ये जितने भी पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर शो करेगा वो सारे अटेनेबल होंगे. All the points on the curves are attainable, and this will be known as the efficient production, and inside the curve it is known as the underutilization, and outside the curve it is unattainable. On the curve these are attainable and efficient production, inside it is known as the underutilization, and outside the कर्व नोन एज दी अनअटेनेबल. फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो वीट और राइस प्रोड्यूस करता है. ज्यादा वीट प्रोड्यूस करेगा तो राइस कम मिलेंगे बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये दिखाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रेड ऑफ्स को. ऑल्सो इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज जितना ज्यादा एक गुड के ऊपर रिसोर्सेज यूज करेंगे उतना ही दूसरे पर कम यूज होगा. So we have already covered the PPF explanation. So explanation is PPF shows the different combinations of two goods that an economy can produce using the limited resources and given technology. Also it is a downward sloping because more of one good the economy must give upon some quantity of the other good. Also movement along the PPF shows the opportunity cost and the usual concave shapes which reflects the law of increasing opportunity cost. As more of one good is produced, the larger the sacrifice of the other good is required. Coming next to the economic problems, what to produce, how to produce, and who gets it. In what to produce, कौन से goods services जो हैं वो बनेंगे. Question relates to the choice of goods and services in an economy that should be produced and in what quantities. So for example, a government must decide whether to produce more public hospitals or defense equipment with the limited funds. Another is how to produce. इसमें कौन से resources और technology use की जाए. The question concerns the method of production used to produce goods and services. So an economy must choose between labor-intensive and capital-intensive techniques based on the cost and availability of resources. In what to produce, इसमें होता है कौन से goods और services बनाए जाएं. Second is how to produce, इसमें कौन से resources और technology use की जाए उसके ऊपर बात होती है. Then third is who gets it. Distribution अब कैसे होगा. So this question deals with the distribution of output among the members of the society, and it depends on factors like income, ownership of resources, market forces, or government policies. For example, people with higher income can afford private health care while lower income groups depend on the government hospitals. इसका एप्लीकेशंस जो है वो हमें गाइड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए. इन व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाए जाएं. इन हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज की जाए. एंड थर्ड हु गेट्स इज, इसमें बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. Our next topic is economic systems and government role. So first is command economy, where the government controls the production and the distribution. यहाँ सिर्फ government decide करता है. For example, the North Korea. Second is laissez-faire economy, where the economy works without government intervention. जहाँ पर बहुत ही कम government का intervention होता है. Such as the example of prices decide by the demand and supply. Third is consumer sovereignty. Consumers decides the production, or consumer decide what is produced through their demands. For example, high demand for smartphone increase their production. Then another is free enterprise. That means firm decides the output. Firms freely decides the production to earn a profit. A private firm setting up a factory is an example. Another is price theory, where prices are determined by the demand and supply, where the equilibrium comes. So for example, rise in vegetable prices due to higher demand. There may be a case of higher demand or higher supply. So coming to the last topic of today,
that is mixed economy. So mixed economy में क्या होता है, प्राइवेट ओन एंटरप्राइज और गवर्नमेंट प्लानिंग दोनों साइड बाय साइड चलती हैं. A mixed economy combines private enterprise with government control where both market forces and the state play an important role. Both will play an important role here. For example, इंडिया जो है वो प्राइवेट फर्म्स फ्री ऑपरेट करते हैं और जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर और रेगुलेशन प्रोवाइड करती है. India, where the private business operate freely, but the government regulates sectors like education, health, and railways. Both plays the important role in a mixed economy. And with this is all for today for the unit 1, or you can say the part 1. Rest will be uploaded in the part 2. Thank you everybody, and if you like this video, do comment, share, like, and also tell how you like the video and what do you want the next. Thank you.